Hello, my dear student. How are you all? I hope you are doing good. I'm Rashmi, again welcoming you on my channel Math Mysteries with Rashmi. As we have already started with how can we find out the number of zeros, and before we directly learn about the number of zeros, we learned about how can we find out the powers of prime number, maximum powers of prime number. Whatever is the number given, we have to check how many times that prime number will be coming into that. For that, if a number is given, we can directly find out the prime factors of it. But if we have factorial for any number, then in that case, we have seen the entire method. So I hope you have practiced enough, and whatever the doubts are there, you have asked me in the chat box. So please keep on practicing. Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon button, and of course, do not forget to share my video to your friends, family, and your relatives so that they will also get the benefit of all these shortcut methods, which are going to save a lot of calculation time, right? So let's begin. Let's continue with the same topic. How can we find out the number of zeros? But this time we will be looking some other cases, not basic like factorial of any number. It will not be given because those sufficient example we have taken. So this time we will be having multiple based example, multiple of particular number, and we will of course have one extra example which is a bit related to the previous one. So here the first example we have, find the number of zeros in 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. So it is going till 89. What we can observe here, is it the series of even numbers? Is it the series of odd numbers or any specific series it is? Yes, it is the series of prime number till 89, right? So these all are the prime number. And we know that zeros we get only with the combination of 2 and 5 together. One set of 2 and 5 will give 1 0. Two sets of 2 and 5 will give two zeros. Three sets of 2 and 5, like 2 to the power 3 multiply 5 to the power 3, is going to give us three zeros. Here, how many sets of 2 and 5 we have? That we have to check. So, first of all, 2 is the only even prime number. The other even numbers are not prime. 4, 6, 8, 10. All of them are definitely divisible by 2. That is why they are not the prime number. So we have only 2 as the prime number here. That means 5 जो है वो 0 हमको देगा तो सिर्फ 2 के साथ में ही दे सकता है. And we have only 1 2 here. That means 1 0 will be there. Here it will be having 1 0 will be there. Right? How many zeros will be there? Only 1. So 2 multiplied by 5 is going to give me 10, which is only 1 0. Right? Similarly, we will have now multiple based example. What do you understand by multiple based example? Here is the example. So, what is given here? We have to find out the number of zeros in 2 multiply 4 multiply 6 multiply 8 multiply 10 multiply 12 14 16 18. Likewise, till 60 we have to keep on multiplying. अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि हम इसको 60 फैक्टोरियल भी नहीं लिख सकते. 60 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ऑल द नंबर फ्रॉम 60 till 1 or from 1 till 60 we have to multiply together. So how we will be doing it? So in that case हमको इसको somehow फैक्टोरियल के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा. बट उसके लिए we have to use our one skill, that is taking out common. ओके, आई नो कि मल्टीप्लीकेशन में हमने कभी भी कॉमन नहीं लिया है. वी यूजुअली टेक कॉमन लाइक 2 + 4 + 6 + 8 है. सपोज इसमें से कॉमन लेना है तो यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया बिकॉज दिस 2 कैन बी रिटर्न एज 2 × 1, दिस 4 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2, दिस 6 कैन बी रिटर्न एज 2 × 3, and this 8 can be written as 2 × 4. So everywhere we have 2, 2, 2, 2. So this 2 we can write commonly outside, and from the first term we will have 1. From the second term we'll have 2, from the third term we'll have 3, and from the fourth term we will have 4. So अगर आप यहाँ से भी solve करोगे 6 + 4 gives me 10, 8 + 2 also gives me 10, and 10 + 10 इसका आंसर क्या है 20. And from here also you will get the same answer. 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 2 × 10 gives me 20.
राइट. सो 20 यहां से भी आ रहा है, 20 यहां से भी आ रहा है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ जीरोज वी हैव हियर फॉर दिस पर्टिकुलर केस 2 plus 4 plus 6 plus 8, दिस इज गिविंग अस ओनली 1 0. बट ये कॉमन लेने का पैटर्न एडिशन में है. मल्टीप्लीकेशन में हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर 2 है, चलो लेट्स राइट दिस 2 आउटसाइड एंड इसको लिख दे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एवरीवेयर वी हैव 2. सो लेट्स राइट इट. 60 में से 2 चला गया, 2 30 बचा और ऐसे कॉमन ले लिया. नो, इसका मतलब होगा कि 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई टिल 30. दैट मीन्स 30 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे. सो वॉट विल बी द करेक्ट वे टू डू इट? द करेक्ट वे इज 2 इज नॉट ओनली हियर, ये 4 जो है वो भी 2 का स्क्वायर है, राइट. Or we can write it as 2 multiply 2. Multiply 2 multiply 3. Multiply 2 multiply 4. So first term is 2 multiply 1. Second term is 2 multiply 2. Third term is 2 multiply 3. Fourth term, these are not actually term but still I am saying it, ये पूरा मिलाकर एक ही टर्म है क्योंकि टर्म सेपरेट होती है प्लस और माइनस के साथ में. बट स्टिल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग इट एज 8 कैन बी रिटर्न एज 2 multiply 4. 10 can be written as 2 multiply 5 dash dash dash. 60 can be written as 2 multiply 30. राइट. अभी हर एक पार्ट में हमारे पास एक 2 है. लुक हियर ऑल्सो वी हैव 1 2 2 2 2. सो अगर सब सेट में से मैंने 2 2 2 कॉमन लिया तो पहले तो 1 के साथ में 2 है, फिर सेकेंड वाले में 2 के साथ में भी 2 है, थर्ड वाले में 3 के साथ में भी 3 है. तो 1 के साथ में था तो एक ही बार 2, 2 के साथ में हुआ तो 2 बार 2, 3 के साथ में हुआ 3 बार 2 हो गया, 3 2 मैंने कलेक्ट कर लिए. 4 के साथ में ये 4th 2 हो गया, 5 के साथ में 5th 2 हो गया, 30 के साथ में है मतलब ये 38th 2 है. सो 2 की पावर 30 वी कैन राइट कॉमनली आउटसाइड. मैंने सारे 2s को बाहर भेज दिया है और ऐसे कितने सेट बन रहे हैं? 30 सेट. So 2 power 30 will be returned outside and from each part like 2 can be written as 2 multiply 1. So वहां से 1 बचा है मेरे पास में. Second part was 4 where we had 2 multiply 2 which can be written as 2 only because 2 we have sent outside. Third was 6. Third number was 6. So 2 multiply 3. 3 we kept here itself. Then 4 we kept here itself. 5 also we kept here itself. And at the end we have 30 here. सो बहुत इजी होता है ये. ओनली द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग आउट कॉमन. दैट वी नो हाउ टू डू इट फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन बट फॉर मल्टीप्लीकेशन वी हैव नेवर डन दिस. दैट इज वाई दिस 2 multiply 4 multiply 6 multiply 8 multiply 10 and so on multiplied with 60 till 60. So somehow we wrote it as 2 to the power 30. अब ये 30 कैसे आया? आपको इसका वो भी नहीं करना है, इतना ब्रेक भी नहीं करना है. ऐसे ब्रेक करके नहीं लिखना है कि पहले मैंने 2 multiply 1 लिखा, फिर 2 multiply 2 लिखा, 2 multiply 3 लिखा. ऐसे करना नहीं है. दैट वॉज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस आई वॉज शोइंग यू. यू डायरेक्टली हैव टू लुक टू द क्वेश्चन. यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं. लास्ट नंबर में क्या आ रहा है? 60. Last number is 60. You simply have to divide this 60 last number by the multiple of, because we have taken the multiple of 2. So 2 को कॉमन लिया है, अपने कॉमन 2 लिया है तो 2 से डिवाइड कर दो. 2 से डिवाइड करने पर यहाँ 30 मिल रहा है. दैट मीन्स लास्ट टर्म हो जाएगी मेरे पास 1 multiply 2 multiply 3 multiply ऐसे करते करते मैं 30 तक जा रही हूँ. एंड वी नो कि 30 तक जा रहे हैं, 30 29 28 ऐसे करते करते मल्टीप्लाई हम 1 तक पहुंच रहे. 1 से 30 तक का मल्टीप्लाई दैट मीन्स इट्स 30 फैक्टोरियल. अब 30 फैक्टोरियल में बहुत सारे 2s हो गए, हमको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो 30 फैक्टोरियल में हाउ मेनी 2s आर देयर एंड हाउ मेनी 5s आर देयर? तो 2 तो वैसे भी बहुत सारे हो गए क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो जो जितना छोटा प्राइम नंबर है उसकी पावर उतनी बड़ी होगी. कंपैरेटिवली 5 यहाँ पे 2 ज्यादा हो गए और ऑलरेडी 32 तो हमारे पास में है. सो द एक्चुअल सोल्यूशन फॉर दिस शुड बी, ऐसे मैंने लिखा, फिर उसके बाद में इसको स्प्लिट किया 2 multiply 1. इफ यू आर डूइंग इट योर सब्जेक्टिव एग्जाम, पहले मैं ये स्टेप लिखूंगी, ये नंबर, फिर उसके बाद में ये स्टेप, देन दिस स्टेप एंड देन आफ्टर दैट आई विल राइट इट इनटू दिस वे. नाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ, maximum power of 2
and here 5 of 5. So maximum power of 2 in 30 factorial and here also in 30 factorial about 5. But as I said before कि 2 की पावर्स ज़्यादा ही आने वाली है तो 30 फैक्टोरियल में अगर मैं 30 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर दूं तो 15 मिलेगा 15 अगेन विल बी डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 7 2 7s are 14 because again by 2 gives me 2 3s are 6 again by 2 gives me 2 1s are 2 so 15 plus 7 plus 3 plus 1 7 plus 3 10 15 plus 1 16 so how many 2's are there 2 to the power 26 right 26 2's we have how many 2's we have 26 times we have 2's how many 5's are there so here we will be dividing it by 5 so 30 divided by 5 gives me 5 6 are 30 now again it will be divisible by 5 5 ones are 5 so 6 plus 1 that means 7 times we have 5's here. Here 26 times and here 7 times. 5 to the power 7. So from here what we can conclude 2 is coming 26 times and 5 is coming 7 times. Right? Already we had 30 times 2 we had in the question only. Right? तो पहले से तो हमारे पास में 32 थे ही और यहाँ से 26 2's हो जाएंगे तो 2 तो बहुत सारे हैं 2 we have 56 but 5 we have only 7 so how many zeros will be there? How many sets we will be able to make of 2 and 5 together? Only 7 sets because we are here we have shortage of 5. 2 तो बहुत सारे but 5 we have in less number. That is why total 7 zeros will be there. Right? How many zeros will be there? 7 zeros will be there. So this way आपको डायरेक्टली ये स्टेप करनी है ये स्टेप करनी है यहाँ पे लिखने के बाद में simply you have to find out how many fives are there that's it and you can say 7 times 5 is coming that means 7 zeros will be there right and how you will get to know what will come at the end for that you have to do this rough work I hope it's pretty easy for us to understand and even to apply as well. Let's move to the next example, which is again going to help us. Here also we have the series multiples of 2 only. So 2 multiply 4 multiply 6 multiply 8. Again, as I mentioned before, subjective में अगर आप करोगे तो इसको आपको split step by step करना पड़ेगा 2 multiply 1 2 multiply 2 2 multiply 3 2 multiply 4 2 multiply 5 2 multiply 128 you will be writing it into that way. But as we are doing it in the objective for the objective one so 2 ones are 2 2 twos are 4 2 eights are 16 right so this 256 how many times 2's are there if we take commonly so 2 to the power 128 will be written here why 128 because 128 pairs we have सबसे पहले मैं लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करूंगी जो भी नंबर आ रहा है वो 2 की पावर में मैंने कॉमनली लिख दिया 2 power 128 and then in the bracket I will have non-common part as the product from 1 till 128 so 1 2 3 4 5 6 till 128 will be multiplied together so 2 to the power 128 multiplied by 128 factorial now we have to find out the maximum powers of 2 and maximum powers of 5 so I am going to only find out the maximum powers of 5 in 128 factorial. So 128 will be divided by 5. 5 twos are 10. 28. 5 fives are 25. Then again by 5. 5 fives are 25. Again by 5. This gives me 1. So 25 plus 5 plus 1 gives me 31. So how many zeros, how many fives are there? 31 fives are there. So 5 to the power 31 we have. Here already we have 2 to the power 128 और यहाँ से और 2's मिलने वाले बट हमको इक्वल क्वांटिटी में जितने 2's है उतने ही 5 हो गए तभी हम 10 बना पाएंगे एक्स्ट्रा 2's we can't do anything with those extra 2's right so 31 zeros will be there at the end. At the end, how many zeros will be there? 31 zeros will be there. I hope it's clear now, right?
We will have the other examples as well in which we do not have only the multiples of 2. यहाँ पे हमारे पास में multiples of 7 we have. So 7 multiply 14 multiply 21 multiply 28. So this time last number will be divisible by exactly 7. क्यों 7 से divide करेंगे? Because it's the multiple of 7 we have written. So 700 divided by 7 gives me 100. So जब मैं common लूंगी, so 7 की power 100 मैंने commonly कर दिया बाहर, right? In bracket I will have 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 multiply. Look, 7 ones are 7, 7 twos are 14, so I got 2 here. 7 threes are 21, I got 3 here. 7 fours are 28, so I got 4 here. 7 fives are 30, so I got 5 here. And 7 multiply 100 gives me 100. Now, this gives me 7 to the power 100 multiply 100 factorial, right? 100 factorial. You can, from here, you can directly reach to this step as well if you have understood this concept. कि ये 100 कैसे आ रहा है, पावर में भी 100 लगना है उस नंबर के और फैक्टोरियल भी 100 ही आना है, राइट? एज सुन एज यू गेट टू नो 100 फैक्टोरियल, अब यहाँ हमारे पास में 2 नहीं है, right? We don't have 2's here. So what we will do? Yes, we will find out maximum power of 2 and 5 both. As we already know कि 2 की पावर्स तो ज्यादा ही आने वाली है 100 फैक्टोरियल में comparatively 5 की पावर्स से, but still if we want we can find out. But I am going to find maximum power for 2 and 5 both in 100 factorial. Okay, so maximum power for 2 and 5 both, 100 will be divided by 2, 50 times I am getting, again by 2, 25 times, again by 2, 12 times, again by 2, 6 times, again by 2, 3 times, again by 2, 1 time. So I got 50 plus 25, 75, plus 12 plus 6, 18, 18 plus 3, 21, 21 plus 1, 22, right? So this gives me 97. So 2 to the power 97 we have here. How many times 2's we have? Though it was not needed to calculate, but still we calculated it just for the understanding. Exam may, like if it is objective exam, if you do not find the maximum power for 2, then also it's okay. You can directly find out the maximum powers for 5. For that, we will divide it by 5, whatever the factorial we have. So 5 2's are 10. We will be getting 20 quotient. Again by 5, 4 times. Now 4 is not divisible by 5. 4 is smaller than 5. That is why. So 20 plus 4, 24 we are getting as the power, maximum power of 5, 24. So how many sets will be possible to make? We have many 2's with us, but we are we have shortage of 5. So that is why only 24 zeros will be there. So 24 zeros will be there at the end. Right? How many zeros will be there? 24 zeros will be there at the end. I hope it's quite easy for application and understanding. You simply have to do 3 steps, first, second, third, and directly you have to find out the maximum power for 5. In such cases, क्योंकि फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 की पावर ज्यादा ही आनी है कंपैरेटिवली 5 पावर्स, राइट? Until we do not get 5 power something something here. अगर 5 की पावर 100 आता तो हमको फिर 2 की भी पावर निकालना पड़ेगा, 5 की भी पावर निकालना पड़ेगा, अगर ये 5 के मल्टीपल पे फॉर्म में होता. We will be looking to many more examples, same type of also, so that will not get confused. Now the last example here we have the multiples of 13. So this can be written as 13 multiply in bracket 13 ones are 13, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 13 fours are 52, 13 fives are 65, and dash 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 143 14300. 14,300 will be divided by 13. 13 ones are 13, again 13 ones are 13, and 00. So 1100 times it is getting divisible. 143,000 is the 1100th multiple of 13. So 1100 यहाँ आ रहा है, that means 13 की पावर में भी 1100 आएगा, राइट? अभी 13 की पावर कुछ भी हो, हमको सिर्फ 1100 की फैक्टोरियल वैल्यू से मतलब है, क्योंकि ये 13 की पावर 1100 इज नॉट गोइंग टू गिव अस 2 और 5,
We will not get any 2s or 5s from here, but yes, here we will be definitely getting. So 1100 factorial, उसमें भी 2 की maximum powers of 2 we do not have to find. We can directly find out the maximum power for 5 only, because 2 की powers comparatively 5 ज्यादा ही आएगी. बट नंबर ऑफ जीरोस तो हमको इक्वल क्वांटिटी ही देगी. जितने टूज है उतने 5 होने ही चाहिए. अगर नहीं है तो जितने 5 है उतने 2 को हम यूज करेंगे. एक्स्ट्रा के 2 बच जाए चलेगा. राइट. सो मैक्सिमम पावर ऑफ 5, 1100 divided by 5, 5 twos are 10, 5 twos are 10, 0 times. Again by 5, 5 fours are 20, 5 fours are 20. Again by 5, 5 eights are 40. Again by 5, 5 ones are 5. Right? So 220, 220, 44 plus 8 plus 1. 44 plus 8 gives me 52. 52 plus 1 is 53. So this gives me 273. So 5 to the power 273 we have. Maximum power of 5 in 1100 factorial is 273. So how many zeros will be there? Of course 273, because 2 की power तो ज़्यादा ही आनी है. So 273 zeros will be there. I am not saying you have to only check 5 powers. Some cases you need to check the powers of 2 also. That depends the case. Like multiple 2 वाला जो था उसमें हमने चेक किया 5 के powers 5 के multiples में आएगा. That time we have to check for 2 as well, for 5 as well. क्योंकि हो सकता है कि 5 की पावर ज्यादा आ जाए 2 के कंपैरेटिवली. राइट. और 2 की पावर कम आए. तो इन दैट केस जितने 2s है उतने ही 10s बनेंगे. राइट. 2 की पावर अगर 7070 आ रहा है और 5 की पावर 85 आ रहा है, सो विल नॉट बी गेटिंग 85 जीरोस. बिग 5 ज्यादा है 2 कम है. सो जितने 2s है जितनी मिनिमम पावर है उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे. ओके. दोज मेनी जीरोस विल बी देयर. सो 273 zeros will be there at the end. I hope you can apply all these. Look for many more examples in your practice book, in your reference book. Wherever you find these type of example, you can create it by your own. Take the any of the number, like 7 के multiples से बना लो, 69 के multiples से बना लो. But yes, try to do it. So until we do not meet, you have to keep on practicing. Take care of yourself. And yes, do not forget to hit the like button. Please subscribe my channel, press the bell icon button, and yes, you have to share my video to your friends, family, and your relatives, so that I will also get the motivation for from your side. Like I am going on the right track. Somebody is actually in the need of all this, right? So please like my video and subscribe my channel. Bye everyone. Take care.